Assalamu alaikum. I hope everything is going well around you. Today I am going to teach you first chapter reading the savior of mankind. As you know guys, reading is very important language learning skill. So let's start reading. First I tell you meaning of words and then the translation of the sentence. Okay guys, listen me carefully. Eradicate, eliminate, Hatma. Passed on, give, अता किया. Conveyed, express, पैगाम पहुंचाना. Clot, coagulate, जमने. Coagulate, blood, frame blood, जमा हुआ खून. Bountiful, generous, green. Now, listen me carefully. The flow of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. Divine, Rabbani, Yahudai, message, पैगाम, continue, जारी रहा. Okay? पैगाम रबानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 30 साल तक जारी रही. And the holy prophet, peace be upon him, had risen to proclaim oneness of God, Tawheed, and the unity of mankind. Risen, उठे, proclaim, ऐलान किया, oneness, वहदनियत, of God, अल्लाह की, unity, इत्तेहाद, mankind, इंसानियत. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदनियत यानी तौहीद और नस्ल इंसानी की वहदियत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Mission, मकसद, destroy, तबाह करना, nexus, रिश्ता, superstition, तोहम, ignorance, जहालियत, disbelief, यकीन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद अहम परस्ती, जहालियत और बेयकीनी के बंधनों को निस्तो नबूद करना. Set up a noble conception of life. Set up, कायम करना. Noble, set up, कायम करना. Noble, आला, conception, तस्वर of life, जिंदगी का. Mankind, इंसानियत. Light of faith, नूर ईमान. Divine bliss, रज़ा इलाही. जिंदगी के आला और फा तस्वर को कायम करना और नूर इंसानी को नूर ईमानी और रज़ा इलाही के लिए रहनुमाई करना था. Is it clear guys? It's important that you learn the meaning of different words. In this way it is easy for you to translate sentence into Urdu. Okay guys? Okay. Divine message, heavenly communication, wahi. Risen, happen, पैदा. Destroy, obliterate, तबाह करना. Nexus, गठजोड़. Superstition, false nation, वहम परस्ती. Noble, dignified. Proclaim, state publicly, ऐलान करना. Now, listen me carefully. Since this belief was threatening their dominance in the society. Since, चूँकि, belief अकीदा, threatening खतरा, dominance गलबा या तसल्लुत, society माशरा. Okay guys? Now I'll translate into Urdu. चूँकि ये कीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था. पैगान अरब्स, कुफार अरब. Started, शुरू हो गए. Mount, बढ़ाना, प्रेशर, दबाव, to Rasul on the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his followers, सहाबा, पैरोकार. कुफार अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. They wanted to renounce their cause
and take to idol worshipping. They wanted, वो चाहते थे, renounce, छोड़ दें, cause, मकसद, to take and take to idol worshipping, बुत परस्ती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्ब वालीन से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें. On one occasion, they sent a delegation to the Holy Prophet, peace be upon him, kind and caring uncle Abu Talib. One occasion, मौका, sent, भेजा, delegation, वफद, kind, रहमदिल, caring, ख्याल रखने वाले, uncle, चचा जान. एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक वफद भेजा. They told him to restrain the Holy Prophet, peace be upon him, from preaching Allah's almighty message or face their enmity. They told, उन्होंने बताया, restrain, रोकें, मना करें, preaching, तबलीग से, message, पैगाम, face, सामना, their enmity, दुश्मनी. उन्होंने आपसे कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिम तरीक़ के पैगाम से बाज रखें या हमारी दावत का सामना करें. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. Dilemma, मुश्किल. Sent, भेजा. Nephew, भतीजा. Explained, वजाहत करना. Situation, हालत. खुद को एक पेचीदा सूरत हाल की हालत में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलावा भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत हाल की वजाहत की. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. Answered, जवाब दिया. Memorable, यादगार. Words, अल्फाज. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. My dear uncle, मेरे प्यारे चचा जान, if they put रख दें sun in right hand and the moon in my left. मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद को बाएं हाथ पर, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of God. Abandon, छोड़ना, proclamation, तबलीग, of the oneness, वाहदनियत. फिर भी मैं खुदा की वाहदनियत के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा. I shall set up the true faith upon the earth or preach in the attempt. Set up, कायम करना, true faith, मुकम्मल ईमान, अर्थ ज़मीन, preach, तबाह, in the attempt, कोशिश में. मैं ज़मीन पर अकीदा बरहक को कायम करूँगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा. Is it clear, guys? Now move further. Okay. Threatening, intimidating, धमकाना, dominance, supremacy, गलबा, followers, group, पैरोकार, renounce, give up, तर्क करना, worshipping, पूजना, idol, मूर्ति, occasion, time, मौका, delegation, allocation, वफद. Restrain, hold back, रोकना, बाज रखना. Dilemma, quandary, उलझन. Memorable, unforgettable, यादगार. Proclamation, public statement, ऐलान. Perish, die, तबाह होना. Abandon, dump, तर्क कर देना. Okay. The Holy Prophet's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, impressed, मुतासिर होना, nephew, भतीजे, frame, पुख्ता या मजबूत, determination, अज़म, that he replied, जवाब दिया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अपने भतीजे के अज़म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, son of my brother, मेरे भाई के बेटे, go the way none will declare touch do. I shall never forsake thee. कोई तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता. forsake, छोड़ना. मैं आप सल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा.
Now move next. Impressed, fascinated, मुतासिर हुए. Nephew, son of brother, भतीजे. Determination, strength of mind, इरादा, अज़म. And the Holy Prophet, peace be upon him, did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. Go the way, उस रास्ते की तरफ गामजन हुए. Chosen, मुंतखब किया for mankind, इंसानियत के लिए. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह का आदम तलिक ने नू इंसान के लिए किया था चलते गए. Imbued with divine guidance and firm resolve. Imbued, सरशार, गाइडनेस, रहनुमाई, फ्रेम, रिजॉल्व, अज़म. इनकॉन्ट्रेट, सामना किया, चैलेंज, मुश्किलात, ग्रेस एंड डिग्निटी, शान व शौकत. अल्लाह ताला की रहनुमाई और अज़्म से सरशार आप वसल्लम ने तमाम मसाइब का मुकाबला खुश उसलूबी और बावकार तर्ज़ अमल से किया. Okay. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. Divine, ज़बरदस्त, force, कुव्वत. Elevated, बुलंदी बख्शी. Possible, मुमकिना. Spiritual, रूहानी. Worldly, दुनिया, domains, आलम और मैदान. और कुछ ही अरसे में रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर सरफराज कर दिया. He was also a driving force behind Arab conquest, which he created an everlasting impression on human history. Divine, ज़बरदस्त, force, कुव्वत, behind, पीछे, conquest, फतूहात, everlasting, हमेशा रहने वाला, impression, तासुर, human, इंसानी, history, तारीख. आप सल्लम अरबों की फतूहात की पुष्प पर एक मुहरी कुव्वत थे जो इंसानी माशरे पर कभी ना ख़त्म होने वाले तासुर को वजूद में लाई है. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. No wonder, हैरानगी की बात नहीं. He is universally, वफाकी तौर पर, दुनियावी तौर पर, acknowledged, माना जाता है, most influential, असरकुन, हिस्ट्री, तारीख में. इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं. आप सल्लम तारीख में हर जगह सबसे ज़्यादा बासर शख्सियत माने जाते हैं. In the word of Michael Hart, a great historian, अजीम तरीदान माइकल हर्ट के अल्फाज में, Muhammad, peace be upon him, however, was responsible for most the theology of Islam and its main ethical and moral principle. However, ताहम, responsible, जिम्मेदार, एथियोलॉजी, तलीमात, मेन, मरकज़ी, एथिकल, अखलाकी, मॉरल, अखलाकियात, प्रिंसिपल, असूल. ताहम हज़रत दुनिया के मजहबी अकायद और मरकज़ी अखलाकियात और अखलाकी असूलों दोनों पर अमल दरामद करवाने के ज़िम्मेदार थे. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the new practice. In addition, मज़ीद बरम, की रोल, बुनियादी किरदार, proselytizing, तबलीग करने में, फेथ, अकीदा, इस्टेब्लिशिंग, नाफिज करना, रिलीजियस, मजहबी, प्रैक्टिस, तलीमात. मज़ीद बरम आप वसल्लम ने नए दीन की तबलीग और मजहबी अमाल को कायम करने में कलीदी यानी अहम किरदार अदा किया. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. Driving, ज़बरदस्त, force, कुव्वत, behind, पीछे, या पुश्त, conquest, फतूहात, well rank,
رینک درجہ، انفلوئنشیل مرکزی، پولیٹیکل سیاسی، لیڈر رہنما۔ در حقیقت عربوں کی فتوحات کی پشت پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. Conquest فتوحات continued جاری رہے گا. Important role اہم کردار human انسانی ہسٹری تاریخ. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ Is it clear guys? Now we move further. Imbued, instill سرشار ہونا. Elevated, eminent رتبہ بلند کر دیا. Everlasting, eternal ہمیشہ رہنے والا. Influential, powerful بااثر. Theology, religion مذہبی علم. Principles mean beliefs اصول. Proselytizing تبلیغ کرنے میں. Now listen me carefully guys. Such a thorough transformation of a man and society owes to the Holy Prophet ﷺ deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. Thorough مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی سوسائٹی معاشرہ اونس ذمہ دار deep faith مکمل ایمان love محبت ہیومینٹی انسانیت کے لیے nobility شرافت کریکٹر کردار. اوکے گائز انسان و معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادم تلی پر پختہ ایمان انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha رضی اللہ عنہ said, Indeed, بے شک his life ان کی زندگی حیات مبارکہ پرفیکٹ ماڈل بہترین نمونہ ٹو فالو عمل کرنے کے لیے. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تقلید کے لیے مکمل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. مورل اخلاق کریکٹر کردار embodiment نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے. The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. Final word آخری الفاظ savior نجات دلانے والا mankind انسانیت. نو انسانیت کی نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں O Prophet اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم surely یقیناً we have sent you as a witness sent بھیجا witness گواہی دینے والا and as a bearer بشارت دینے والا of good news اچھی خبروں کی and as a warner اور ڈرانے والا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. And as one inviting to Allah by his permission and as light giving torch inviting دعوت دے permission اجازت light giving torch روشنی کا چراغ اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. Is it clear guys? Kindly guys you read this paragraph at your home and it is very important that you first learn the meaning of different words. In this way it is easy for you to translate the sentence into Urdu. Is it clear guys? Thank you for listening me. Good luck. Take care.